Hey guys, welcome back to my channel. This is Ujjwal Singh here. So today I came up with a new topic. तो हमारा जो नया टॉपिक है आज कि कैसे आप इज़िली यू कैन स्विच फ्रॉम वन कस्टम रोम टू अनदर कस्टम रोम। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दैट आई हैव माई मोबाइल इज़ वर्किंग विद Pixen ROM. So you can see here. So this is the latest Pixen ROM, and I will switch from Pixen ROM to Bliss ROM, which I have downloaded. So this is the Bliss ROM complete zip file, and this is so for that you need three files. One is Bliss ROM file, second one is TWRP, and third one is OxygenOS latest stable build. Okay, so this stable build you can download it from Oxygen OS file from OnePlus site. So before proceeding with all this, you just need to back up your all data because everything will be erased if you clean flash the custom ROM. So start करते हैं आगे। तो start करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, TWRP में हम बूट करेंगे। ठीक है, तो once I get in TWRP, we will proceed again. Okay, so we have booted into TWRP. So one more thing that whatever file I have told you, the three files, and you should keep them in the USB stick, and which I have connected here. So if anything goes wrong, then your all files will be in USB stick, and you will be easily boot into another file if something went wrong. Okay, so for that you just click on mount and select storage. Install, select storage, USB storage. Okay, click on OK. So we are now in USB storage. Okay, so from here you just tap OxygenOS and swipe to confirm flash. So we will meet after flashing this. ओके, सो OxygenOS का जो स्टेबल फाइल हमने फ्लैश किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद आपको होम बटन प्रेस करना है एंड इंस्टॉल पे जाएंगे। इंस्टॉल पे जाने के बाद में आपको TWRP का जो फ्लैशेबल फाइल है अपडेटेड, ये आपको फ्लैश करना है। So this will flash in both slot A and slot B. Okay, now this is completed. Now click on home button, tap on reboot and reboot recovery. Click on recovery. So this will again boot into recovery. Select storage, USB storage. Okay, so we'll come again in USB storage. Now again flash OxygenOS. So this will boot into another slot. Sorry, this will flash into another slot, as you can see here from in slot B. तो slot B में भी ये flash हो गया है. Again you need to tap home button, then install, and then install TWRP again. So this will again flash TWRP in both slot. Okay, after flashing you just need to tap home, then reboot, again reboot recovery. So with this process you just flash OxygenOS in both slot, which is very important to flash a custom ROM with clean flash method. Okay, now after booting the TWRP recovery again, now again install, select storage, USB storage. Okay, now
we now flash bliss ROM file and wait till it flash. तो हमारा ब्लिस रोम जो है फ्लैश हो गया है अब। हमारा ब्लिस रोम फ्लैश हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये एक्चुअली बिल्ट इन TWRP आता है। तो अगर आपके बिल्ट इन है तो आपको TWR फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्ट इन नहीं आती है ये रोम, कोई और रोम अगर आप फ्लैश कर रहे हो, देन यू जस्ट नीड टू गो होम, देन पुट इंस्टॉल एंड अगेन फ्लैश TWRP फाइल। सो मैं यहाँ पे TWRP फ्लैश नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा इनबिल्ट TWRP ये रोम प्रोवाइड की जाती है। देन अभी हमें क्या करना है, इसमें मेरे को वाइप पे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट डाटा मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा ये रोम बूट होगा। टाइप यस, पुट यस, and this will format all the data. Okay, now after formatting I just need to reboot system. So this will boot the ROM. You just wait for around 5 to 10 minutes and this will boot the ROM. Okay, now booting animation is started. Once it boots up I will show you the setup. So our ROM is booted up, so I just need to complete my setup and all these things. So with this method you can install or switch from one custom ROM to another custom ROM very easily, and just follow this procedure and you will not get any error, anything, any boot loop and anything else. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।